हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? आई एम श्योर एवरीबडी इज गुड, एंड इफ यू आर नॉट गुड, आई एम श्योर आफ्टर दिस लेक्चर everybody will feel good. So hi guys, let us start. This is a fantastic subject, a fantastic journey. I can see a lot of people are starting their finals year journey with this subject. For some of them it can be second subject and so on. So guys, to start with, okay, I'm just had a very small introduction to what we are going to do in this entire subject, how we are going to study, what books we are going to get, what is going to be our course of action. मैं फटाफट थोड़ी देर में आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी नो बकवास. We will move on to the target. So guys, as the name suggests, advanced financial management. Wow. Whenever I read this word for the first time, advanced financial management, I always see, it is advanced financial management. So can I say technically it is फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडवांस पार्ट? बरोबर है. और अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडवांस पार्ट है तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि हम लोग ने जितना भी इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है उसका एडवांस पार्ट है. इसके पहले इस सब्जेक्ट का नाम था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इंस्टीट्यूट इन पर्टिकुलरली आईसीएआई ऐसा बिलीव करता है कि बच्चों ने इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, फाइनल में हम लोग उसका एडवांस वर्जन करेंगे. और इसीलिए एक छोटा सा इंप्लाइड प्रिजम्पशन है कि आप लोगों को ऑब्वियसली पूरा इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद. So there is a small presumption which I said as, and a lot of time a student asks, sir, what do you think? आपको क्या लगता है कि वो लोग हम लोगों को इंटर का भी पूछ सकते हैं क्या फाइनल में? So to be very honest, जितना भी अपने इंटर में पढ़ा है वो as it is फाइनल में आ सकता है. जितना भी इंटर में आप लोगों ने एफएम पढ़ा है, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्ट मेकिंग फेसेस, बट आप लोगों ने जितना भी इंटर में पढ़ा है वो एज इट इज फाइनल में आ सकता है. बट देयर लॉट ऑफ यू ऑल आर ऑलरेडी माय स्टूडेंट, सो आई जस्ट गिव यू वन बैकग्राउंड विच आई हैव इन माय माइंड. मेरे हिसाब से तुम लोग ने इंटर में कुछ पढ़ा ही नहीं है. कैन आई प्रिज्यूम इट दैट वे? हाँ, अब मजा आया सर, अब हमारा बंदा लग रहा है. सो I am obviously going to presume that you don't know anything. But let us accept the fact. The fact remains कि आपको थोड़ा तो पता है, ओके, शायद सब कुछ याद नहीं है, और मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं याद है, तो मैं धीरे धीरे आपको याद दिलाऊंगा. I'll start making the base, and unless we are strong base wise, we will not go ahead. That will be our mutual contract. ठीक है बेटा? So that is so much for your advanced financial management. Obviously we are moving further, हम थोड़ा एडवांस पार्ट में जा रहे हैं, but as a teacher I am going to presume you don't know anything. मैं बहुत बेस से स्टार्ट करूंगा. Trust me, in today's 3 hours only you will understand where are we going to head, and this lecture is going to actually make it very clear. Okay, now let's start. How are we going to study? So I have already bifurcated chapters here. Okay, all of you guys can see I have divided your entire AFM into 3 parts. Your entire AFM is been divided into 3 parts. So अगर मैं इसको अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं तो हम लोग है ना 3 टुकड़े में इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे. एक होगा आपका नॉन डेरिवेटिव चैप्टर्स. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑल्सो आई विल टीच यू, डोंट वरी. और अभी मुझे डेरिवेटिव सिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ यू गाइज वुड हैव बीन ट्रेडिंग और व्हाटएवर नॉनसेंस, बट विल डू अ लॉट ऑफ दैट इन क्लास. So one segment is your non-derivative chapters, another segment is your derivative chapters, and last segment is your theory chapters. So in all, if I open a module, there are total 15 chapters. In those 15 chapters, you can see 6, 4, 5 bifurcation. 6 chapters are your non-derivative chapter, जिसमें है advanced capital budgeting, security valuation, portfolio management, mutual fund, business valuation, mergers and acquisition. When I come to the derivative segment में you will see derivative as a chapter. You will see forex, foreign exchange risk exposure and management. Then you will see interest rate risk management. You will see international financial management. And when I come to the last part, which is a theory part, pure theory, if there are some pure theory chapters, which also we will do, mostly I will give you a video backup for those chapters, and next day we will take a test or something like that. We will play around. So in those theory chapters, if I divide, then you have financial policies and corporate strategies, you have risk management, you have securitization, you have startup finance, you have security analysis. So these are the chapters. Our code of conduct, flow of lecture will be, first we will focus on non-derivative chapters. हम शांति से नॉन डेरिवेटिव चैप्टर्स करेंगे. ये वो चैप्टर्स है जहां पर हम लोगों को इंटर का कैपिटल स्ट्रक्चर,
कैपिटल बजटिंग, वो सारी चीज, रेशियो एनालिसिस. सो वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ यूसेज. आई विल डू एवरीथिंग इन डिटेल इन द क्लास, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, हम वहां से बेस करके स्टार्ट करेंगे. देन विल एंटर इनटू डेरिवेटिव पार्ट. डेरिवेटिव पार्ट, ट्रस्ट मी, वो सभी लोगों के लिए नया है. None of us have ever seen any of that segment in our any of the academic career before. And then comes the theory part. We will do it. I've just had a small analysis here of what kind of weightage can we expect in exam. So here, if I can go ahead, you can see I've bifurcated attempt wise. There's May 24, November 24, May 25 and September 25. तो ऐसे मैंने पूरे अटेम्प्ट्स को डिवाइड करके थोड़ा एक रफ एनालिसिस किया है, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है. सो इफ आई गो टू अवर नॉन डेरिवेटिव पार्ट, विच इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट सेगमेंट टारगेट. नॉन डेरिवेटिव पार्ट प्योरली इन नेक्स्ट 2.5 months our target is going to be non derivative part. वो roughly 50 to 55 marks का we are expecting that in exam. In fact, if I can go ahead, last 3 attempts से देखो, November 25, November 24, May 25, September 25, they've been asking 62, 60 and 54 marks of non-derivative chapters. If I go more further, what is the derivative part weighted? Derivative part should be anywhere between 40 to 45, but I'll not be surprised अचानक से एक अटेम्प्ट में उन लोग ने 55-60 मार्क का उसमें से पूछ लिया. मोर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग 20-25 मार्क्स का दे आर आस्किंग यू द theory chapters. Now what is this 20-25 marks? खाली एक ही अटेम्प्ट में they have crossed 25 marks. Otherwise on average 18, 8, 20, 15, 10, 20 ऐसे वो लोग पूछ रहे हैं. Most of this is based on case scenario basis questions. इन थियोरी चैप्टर्स में भी छोटे छोटे सम्स है, कभी कभी वो लोग वो भी पूछते हैं. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू. बट आवर ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी, वी विल कंप्लीटली डू एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ. आई हैव डिवाइडेड माय फ्लो ऑफ लेक्चर्स इन सच अ वे कि हम लोग सबसे पहले, मैं आपको 2 बुक देने वाला हूं टोटल. एक बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है और एक आपको मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक आएगी. इट इज ऑलरेडी ऑन द हैज गॉन फॉर प्रिंटिंग. इन दैट बुक, दैट विल बी आवर क्लास वर्क बुक. So what I've done is every concept, in that every concept, what all sums we need to do to build up that particular concepts. There are sums from past MTP, RTP, PYP, and there are sums from foreign courses also, from foreign books, foreign author books, which I believe कि वो लोग पूछ सकते हैं अगर उन लोग ने थोड़ा लेवल बढ़ाया. मॉड्यूल के सब वो सब मिला के we will be doing it in class. So I'll give you questions that will be purely question book, and answers will be developing in the class. Answer sheet if you want, then I'll share it with you all after every lecture. But after we finish each chapter, then everybody have already got a book. If you see, that is a compiler. Now what is this compiler? This compiler is past 6 attempts, RTP, PYP, MTP, past year paper and mod test paper का compilation chapter wise. वो हमारे लिए टेक्निकली प्रैक्टिस बुक है. जैसे ही हमारा चैप्टर हो गया, दो सम्स वी नीड टू डू, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसके अंदर आपके पास आंसर्स भी है. दैट विल एक्ट एज अवर प्रैक्टिस बुक. सो एटलीस्ट वी विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया और प्रैक्टिस के लिए वी हैव फिनिश आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी आल्सो. सो लॉट ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू अपीयर इन May 28 एंड September 28. यू विल नॉट बी सरप्राइज व्हेन यू गो फॉर स्टडी लीव. आई विल गिव यू वन मोर बुक बिकॉज तब तक 6 अटेम्प्ट और हो जाएंगे. अभी साल में 3 अटेम्प्ट है, तो तब तक वो एक नया कंपाइलर आएगा, नया बेस आ जाएगा. बट वी विल कीप ऑन अपग्रेडिंग दैट वे. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी आवर फ्लो ऑफ सेशन. So guys, let's start from today's session, and session stands very important. और अगर कोई मुझे बोलता है सर what are we going to learn in advanced financial management? So बच्चों, here we will not only learn how to value financial instruments, be it security, be it derivative, be it portfolio, but we will also learn how to mitigate risk, how to manage risk to the major extent. Okay, so हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कैसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम वैल्यू कैसे करेंगे, बहुत सारे रिस्क हम उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, एंड सो ऑन. इज अ फैंटास्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ योर फाइनल CS सिलेबस. आई एम कंप्लीटली इन ऑ ऑफ व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट 4 months टाइम्स टू कम. बट ऑल स्टैंड्स विद अ लॉट ऑफ बेस. अगर कोई मुझे बोले कि भाई मैं आपको 10 घंटा देता हूं, आपको 10 घंटे में पूरा AFM कराना है, तो मैं 9 घंटा हर चैप्टर को आधे घंटे में, 1 घंटे में रिवाइज करा दूंगा. 1 घंटा मैं दूंगा प्योरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को. आई वुड स्पेंड 1 hour एटलीस्ट ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी.
So what have I done today? My today's agenda is today we are going to purely learn time value of money. This is our basic agenda for today. I've curated some 17 examples, 16 17 example. We all just have to see कि हम लोग कितना करीब पहुंच सकते हैं. आप कोई भी चैप्टर लीजिए, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पे in some or the other form you will see time value of money coming. The first time you saw time value of money, if I'm not wrong, when you guys were in foundation. फिर फाउंडेशन के बाद इंटर में भी था, थोड़ा बहुत था, किया होगा कहीं ना कहीं पे. फाइनल में टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर विल नीड दिस कॉन्सेप्ट. सो देयरफॉर विदाउट हैविंग एनी बेस आई हैव स्टार्टेड विद वन सिंपल एग्जांपल, और वो एग्जांपल से दिस एग्जांपल वी विल कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन डिफरेंट फॉर्म में, एंड यू विल सी हाउ आई एम स्टार्टिंग टू डेवलप दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड. सो गाइज, my basic expectation today is your AFM lecture. I am sure everybody was aware कि आज AFM का लेक्चर पता था आपको, तो एटलीस्ट कैल्सी लेके आए होंगे आप. भाई अभी ना बोल दोगे तो खत्म हो गया. फिर निकालो कैल्सी निकालो. Everybody, calcis in their hand. Quick. And online people, you guys do have an option to keep the videos on. So just in case if you really want to keep the videos on, you all can keep the videos on. It will give me a lot of... वाह क्या बात है. शर्मा जी नमस्ते. हाँ, इससे पता चलेगा ना कि सामने वाला जाग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है. Now, so a lot of my friends probably there's a chance there that some people have attended the derivative part. So then also I usually start the finals with the time value of money, and it comes to us in different part. Even if you guys have attended, I'm requesting let's have a fresh start, और आप लोग वापस स्टार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है. डोंट नीड टू सी एनीथिंग. एवरीबडी एल्स, आर वी रेडी? ओके, सो आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर अभी तक एवरीबडी हैव पार्क्ड देमसेल्फ इन सम और दी एल्स आर्टिकलशिप. पार्क किया बच्चों आप लोगों ने? हाँ, पहला पगार मिला कि नहीं मिला अभी तक तुम लोगों को? हाँ, मिल गया? नहीं मिला अभी तक? क्या यार, कितना मिलेगा? कितना? अच्छा 12,000. चलो दोनों का एवरेज लेते हैं. 10,000 से पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं. सो आइए बच्चों, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज आई एम गिविंग यू सिंपल क्वेश्चन. दे आर वेरी सिंपल. फॉर सम टाइम यू गाइज विल बिलीव दैट यार इतना इजी है, ये सब हमें क्यों कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं. ये सारे एग्जाम्पल्स आई थिंक हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और हम लोग लिखेंगे भी. कैन वी स्टार्ट द गेम गाइज? Okay, so let's not waste time. Here it is your first example. Example number 1 for time value of money. So if you're giving heading in your notebook, you can give heading time value of money. So, can I? Let's read. If Radha invests rupees 10,000 today, calculate the amount to be received after 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 10 years, 20 years. Interest rate is 10% per annum. I know मैं आपके साथ थोड़ा गेम ही खेल रहा हूँ, but let's do this. Write it. फटाफट एग्जाम्पल आप लिखते जाओ. Then let's start the answer. If Radha invests rupees 10,000 today, calculate the amount to be received after 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 10 years, and 20 years. Interest rate is 10% per annum. So guys, here लिखा बेटा एग्जाम्पल. ओके, अब बच्चों यहां पर देखो. सबसे पहले आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस. एटलीस्ट गिव मी व्हाट एम आई आस्किंग गाइज. आई हैव अ सम ऑफ 10,000 विच आई एम इन्वेस्टिंग फॉर व्हाट पीरियड बेटा? 1 ईयर. और अगर मैं वो 10% पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पता है टेक्निकली हम लोग अभी थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 10,000. व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट बेटा? Future value. So for me, I'm sure everybody knows this, but let's do it. Okay, so if I want to calculate the future value, so my answer would be, okay, so हम लोग पहले A का आंसर देते 1 year का. So what is the future value? Future value is nothing but present value into 1 plus R raised to N. ये पता है आप लोगों को? पक्का? So यहाँ पर अगर 1 year का आंसर मुझे चाहिए, तो my present value is 10,000 और 1 plus R के बदले में 10% के बदले कहना है 0.1
and this will be raised to 1. So I'm sure everybody get the answer. How much is this, guys? 11,000. इजी. ठीक है, ये सब वार्म अप ही करा रहा हूं, तो फटाफट 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 हाथ चलेगा बच्चों. एवरीवन. Now like that, try getting answer for all 2 year. फ्यूचर वैल्यू मुझे आशा है कि आप लोगों को कैलसी यूज करने को आता है. सो माई आंसर वुड बी 10,000 इंटू 1.1. कैन आई राइट डाउन इंस्टेड ऑफ 1 प्लस 0.1? हाइला पहले लेक्चर में भाव नहीं दे रहे लोग नाउ. ओके, अब 1.1 2 साल होगा, तो 1.1 वापस 1.1. इसके बदले मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर ले लूंगा स्क्वायर. आई होप पीपल नो हाउ टू यूज कैलसिस. वन पॉइंट वन स्क्वायर कैसे करते हैं? वेरी सिंपल. यू टेक इन योर कैलसी 1.1 1 इंटू इक्वल टू बस ये हो गया स्क्वायर. नो, यू डिड इट ट्वाइस. रिमूव इट. 1.1 इंटू इक्वल टू, बस कितना है कैलसी पे? 1.21. सो योर आंसर वुड बी 10,000 इंटू 1.21. कितना? इज इट 12,100 गाइस? हेलो. ठीक है, कुछ भी कैलसी में प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना प्लीज. 3 years. 3 years है. हाँ. सो मैम नाउ 3 years हाउ विल यू डू इट? हाँ, 1.1 raised to 3, right? So 1.1 into, yes, equal to twice. 1.331. Everybody got 1.331? So your answer would be 10,000 into 1.331. कितना आ रहा है बेटा? कमाल करता है पांडे. नाउ फिर आएगा डी. 4 years. 10,000 1.1 raised to 4. Here you can do one more trick. हाँ, either you can press it 4 times. So पहले into equal to क्या, तो 2 हो गया, 3 4, or you can do into equal to, that is 2, again into equal to 4. 10,000 into 1.464. Very nice. Now let's go to 10 years. Direct 10 years. Yes ma'am, ये तो खाली प्रैक्टिस चल रहा है. 10,000 into 1.1 raised to 10. So answer will be 10,000 into. So you can go up to 5, then do into equal to. कितना है जिशन? 2.5937. So the answer will be 25,937. So करो ना. 1.1 into equal to, no, not 1.01 ma'am, 1.1 it is. 1.1 equal to, ये हो गया 2 3 4 5. Now into equal to कितना है? हो गया ना. दिस हाँ, इंटू 10,000. चलो लाइक दैट. करेक्ट. लेट्स डू इट फॉर 20 years. आई एम श्योर पीपल आर यूजिंग ब्रेन्स है नाउ. बेटा है 20 years का भी सब लोगों को. पीपल ऑनलाइन. इंटू इक्वल टू 5 के बाद इंटू इक्वल टू इट विल बिकम 10, देन इंटू इक्वल टू इट विल बिकम 20. बोल बच्चों, तो बोल. 6.7275 is equal to 67,275. Fair enough, easy busy.
वाह बच्चों, वाह. Welcome to final C. Now, so that was our round one, wherein we have seen how to use calculators, how do we get future value. Now let me take you to the round two. Now it's a good sum. Please try and be little fast. Okay. If bit2 invest rupees 20,000 at beginning of each year at the rate of 12% per annum, compute amount to be received after 4 years now. First copy it, copy it, copy it, copy it. Come on. Now guys, at the beginning of every year for next 4 years, you guys are investing 20,000. Now how much will I get future value here? Come on. What will be my future value? What will be my future value? Come. I want answers in the chat box there, everyone. No. 95,000 कैसे हो सकता है? 95,586. No better, no. No. 35, it can't be 35. No, ma'am. Why? Because 80,000 तो यही हो गया. That is only for 1 year. One you've seen. चलो अभी चालू हो गया, फाइनल वाला फीलिंग आ गया बच्चों को. 4 for the first case. For the second case, 3. For the third case, every year you are investing 20,000. No, Rina, no. चल हार्दिक फटाफट. This is the example. We just missed first example. You copy this example. We are doing time value of money. जिशान आंसर. अब बच्चों धीरे धीरे फीलिंग आएगा तुम लोगों को फाइनल का. हाँ, राइट आंसर. व्हाट्स योर गुड नेम? माय राइट. बोल ही रहो. कौशिक नो. हेत करेक्ट. हाँ बोल बेटा. चल दीपक जल बेटा. लक्ष्य करेक्ट. सुजल नाइस. नाउ सी लेट मी कीप इट सिंपल. कितना है? नया है ना जिशु? पहले क्या मिस्टेक किया था? इधर देखो बच्चों. सो बहुत बहुत बार है ना, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे. आई रिक्वेस्ट पीपल प्लीज टेक हेल्प ऑफ टाइमलाइंस. Timelines will genuinely help you. So if I have to make this timeline, I request everyone to pay attention. So this is my T0. Okay. Year 1, this is my T1. This is my T2 and this is my T3. Jabki this is first year, second year, third year, fourth year. So I am investing 20,000 at the beginning of each year. So I will be investing 20,000 year. 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 Does this make sense to all of us? पक्का. अब माता जी आपको ये देखना है कि पहला वाला जो 20,000 है, पहला वाला जो 20 आया था बेटा, दिया आंसर नहीं आया ना? पहला वाला जो 20,000 है बेटा, वो कितनी बार 4 साल के लिए मल्टीप्लाई होगा. So I'll get how much percent interest? 12%. I'll get 12% for how many years? I'll get 12% for 4 years. So my answer over here would be 20,000 into 1.12 raised to 4. A lot of people have calculated only for this guy. But what about second year, third year and fourth year investment? So और ये वाला जो 1.12 that will be for 3 years, 1.12 for 2 years and this will be 1.12 for 1 year. That's it. So अभी इन सबका अगर मैं आंसर निकालूं तो you will get 1.12 into equal to 4 times. बोल बेटा एक आंसर दे. 31,470. 31,470. Next.
28,099. Next, 25,088. Next, 22, 22,400. If I total this, 1,07,057. That's it. That's the game. Clear, man? Come on, you're my financial planner. I'm investing 20,000 every year. That is, madam, welcome to CA. So today I'll tell you how your financial calculator operates actually. Hai? Covered everyone? Understood everyone? Nice. Rishi, I think you did some mistake. Clear? समझा बेटा क्या mistake किया? No. There is no option of raise to in this calci. No. You are not allowed. In CA, you are not allowed to use it. And next time, when you will bring your own calculator, you will get more used to on that. Your calculator can look different than this. Done? Understood? पक्का? नहीं समझा? Question समझा क्या? Okay, what's a good name? Nishchay. What is the question? Question says that if bit 2 invest 20,000 at the beginning of each year. मतलब अभी ये कर क्या रहे दोस्त? इसने year 1 में 20,000 इन्वेस्ट किया. उसको हर साल पहला पगार वो इन्वेस्ट कर रहा है. वापस 20,000 इन्वेस्ट किया, वापस 20,000 इन्वेस्ट किया और यहां पर वापस 20,000 इन्वेस्ट किया. सो ही हैज इन्वेस्टेड 20,000 ईच ईयर. तो पहले साल जो 20,000 इन्वेस्ट किया दैट विल बी इन्वेस्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 4 years. सो आई विल गेट 1 + r raised to n. n विल बी हाउ मच? 4 years. थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का जो इन्वेस्ट किया है दैट विल बी देयर फॉर 3 years. करेक्ट नो? 1, 2, 3. And then this will be for 2 years and then this will be for. Clear? So you copied this? Okay. Can we go ahead? Sure. Chal. Now let me take you to the next one. Now things will become easier and heavier in some time, but let me keep it easier first. If Rahul invests 25,000 at the rate of 12% per annum at the end of each year now, how is it different? Last time I was investing at the beginning of each year. Now I'm investing at the end of each year. Compute amount to be received at the end of 4th year. Compute amount to be received at the end of 4th year. Come on, quick. Wait, let everybody get it. 1 lakh? 1,19,483. Let's see. Now, ma'am, you go with the same logic. So what happens? So whatever you will invest at the end of first year, that will stay for how many years now? 3 years. Whatever you will invest at the end of 2 year, second, that will be for next 2 years. Whatever you will invest in the end of third year, that will be there for 1 year. Correct, no? If you want, I'll share this PDF with you, don't worry. Clear? आया आंसर आया? कितना आ रहा है? 119,483. Everybody got this? 119,483. Sure? Shetty.
amount is 25,000, please. So the same logic, guys, absolutely same logic. What we will now do is, here I want everybody to understand 1 2 3. So if I'm investing anything, this is my T0, T1, T2, T3, T4. So here I'm investing 25,000 here, 25,000 here, 25,000 here and 25,000 here. लास्ट वाला 25,000 तो ग्रो भी नहीं करेगा बच्चों. क्यों? क्योंकि लास्ट वाला तो हम लोग ने लास्ट डे पर ही इन्वेस्ट किया. हेलो. सो योर माय आंसर वुड बी into 1.12 raised to 3. Here it would be 1.12 raised to 2. Here it would be 1.12 raised to 1. And here there will be nothing. Nothing. Don't multiply 0. There will be only 1. Now, so इस हिसाब से क्या क्या अमाउंट आ रहा है फटाफट बोलो. One time. Wait, 35,000, 123, 31,360, 28,000, 25,000. कितना बड़ा आंसर? 480, मतलब 19,483. पक्का? सच बोल. आया था आंसर, आया था. अच्छा, one more thing what I could have done it probably if you would have understood this is nothing but you could have took annuity factor here. You could have actually used annuity factor. Annuity factor में भी सेम ही आता. So अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू annuity factor ढूंढना है बच्चों, I don't know how many of you will remember कि क्या फॉर्मूला था, याद है कुछ? 1 plus R. बोलो 1 plus R raised to n -1. नहीं तो ये सिंपल ही रखना है आप लोगों को. nobody remembers this. 1 plus R raised to n -1 upon 100 नहीं बेटा, upon R. चलो ट्राई करो पहले मेरे को बोलो 1 plus R raised to n कितना आ रहा है? 1 plus R raised to n 1 plus 0.12 raised to 4 -1. तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दिया इसमें से. डिवाइडेड बाय 0.12. बोलो. $4.7793. And therefore my future value would have been 25,000 into 4.7793. कितना आ रहा है? Say, oh my God. Joyu? So guys, there are so many formulas, but they have been derived that way. But I'm saying if you know it, anything basic, you can still go and get the answer. Okay? Slowly, relax. No, because you are not getting used to with the calcium. But we are not allowed. 25 years before also when you did CA, that time also it was not allowed. Now, I done this, that? Clear? Can we go for the next one? Here there is. Very simple, I'm sure people will get me answer faster. Future value is equal to rupees 1,25,000. At the end of second year, interest rate is 12% per annum. कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू. मेरे पास अब रिवर्स जा रहा हूं मैं. मेरे को फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो फटाफट. कम ऑन. इन द मीन टाइम पीपल ऑनलाइन, एवरीबॉडी विल कीप आंसरिंग. Come on, Jishu. Online quick answers. Kaushik. पहले का आंसर दिख रहा है.
अर्पिता नो. वेरी नाइस. लक्ष्य. सुजल करेक्ट. अंजलि करेक्ट. जानवी करेक्ट. Rishi correct. Correct. Now, can I? I have कितना 99,649 or something. Check it. So here guys, now it's a very simple. What we will do, we have future value. So in fact, future value का formula अगर मैं continue करूँ, future value is nothing but present value into 1 plus r raised to n. Correct? Now how much is future value here? 1,25,000. How much is present value? We are trying to find out present value, but we know 1 plus r. R is 0.12 and this will be raised to 2. So for me, 1,25,000 divided by 1.12 raised to 2 is equal to present value. Now in fact ये दो तरीके से है. आप लोगों को पता नहीं किसी को समझा कि नहीं समझा, बट अगर आपको थोड़ा बचपन याद आता है तो दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑल्सो. That's what we do now. We discount the cash flows. So even if you would have gone for discounting factor, और अभी discounting factor सुनते हम लोग फटाफट आंसर आता है, that also could have been done. And here right now at least two ways of doing it. 1,25,000 divided by 1.12 का स्क्वायर कितना है? 1.2544. और if I take you to the discounting factor game, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? 1,25,000 multiply 12% for 2 years. So 1 divided by 1.12. डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकालोगे आप? ओ हेलो, कैपिटल बजटिंग भाई, इंटर क्लियर किया है ना हम लोग ने. नाउ नहीं तो तू ना बोला दोस्त. कितना रहा है? 0.79. एक और 7971. ओके, इन ईदर ऑफ द केसेस यू शुड गेट अराउंड 99,649. समझा? So what is this beta? What is this? This is your discounting rate, discounting factor rate, discounting rate. Correct? So we've been using that. Mayank, you had got this? Chal. Discounting rate, I will do it after class. I'll show it to you. है ना? So you do one thing, ma'am. You just few terms which you think na is not been able to connect. Just note it down. We'll sit after class also. Because something because of the gap probably you don't know, and we can do that on the calci. I'll teach you. है ना? Don't worry. Okay, clear? This is clear? Everyone? Sure? Can we go ahead? Chalo. Now guys, let me take you to the next one. Now this is very easy and I'm expecting people to do it. Ma'am, I'll show you discounting rate यहाँ पर कैसे compute करते हैं. Compute present value at the rate of 10% per annum if cash inflow at the end of each year was 25, 32, 20,000. I want present value. Ma'am, see here. I'll show you discounting factor. So this is your 20,000 cash flow. This is at the end of year 1. So 1 rupee at the end of year 1. Today it is not 1 rupee, correct? Huh? So today it is how much? At the rate of 10% of the interest. If I discount that, so what will I do? 1 divided by 1.1 in my calci. 1 divided by 1.1. 1 divided by 1.1. कितना रहा है? 9091 आएगा, बिकॉज विल राउंड ऑफ 4 डेसिमल. ओके, एक वापस इक्वल टू करोगे तो आपको ईयर 2 का मिल जाएगा. 0.8264 वापस करोगे तो यू विल गेट फॉर थर्ड ईयर 7513. Now what is this? This is discounting rate. This is how you compute discounting rate. Okay, so 20,000 which is there, which I'm going to get after year 1. Today its value is only 20,000 into 0.9091. Correct? You understood this meaning? Paka? So now this is, sorry, not 20, na? This is 25,000. 25,000. Then guys, this is how much? This is 32,000. And this is 20,000. Am I correct guys, everyone? Okay, fine. So I'm sure everybody would have got this, क्योंकि अभी इसमें तो आप लोग चैंप हो ही. कितना रहा बड़ा आंसर? 64.
64199 whatever it is. हाँ कोई बात नहीं, आप पहले समझ लो फिर कैलसिस सीखेंगे हम. इसमें सब ऑनलाइन वालों ने आंसर दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़. वाह, वेरी नाइस. Okay, everybody clear? So guys, if you realize I'm just trying to bring you back from inter to final. These are few things which we will need it at a various places. I'm just trying to connect you how quick are we, how good are we in using Calci. Itna to I'm sure everybody have managed so far. Can we go ahead for the better round? Sure. Chalo. Calculate present value if cash inflow at the end of each year is 40,000 for 3 years at the rate 12%. Cash inflow at the end of each year is 40,000 for 3 years. Come on guys, quick one. Ready? Everybody got this? So guys, technically this is so very easy and I'm sure everybody would have got this. So here you could have took 40,000 in each year and then you would have multiplied with this is same 12% we did ऊपर 10% था, ठीक है. So 12% का कितना क्या आएगा 3 साल का अगर मैं अलग अलग करूंगा तो 3 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या क्या है 8928 0.7971 0.7117. So either I could have took 40,000 and I would have multiplied with each of them, or since the 40,000 is already constant, तो हम लोग डायरेक्टली इन तीनों को ऐड करके I would have multiplied with 40,000. कितना इन तीनों का टोटल 2.4018. So 40,000 into 2.4018 louder 96,073. Does that make sense? Everyone? Sure. So you could have to 40,000 each year and multiply 40,000 into 0.8928, 40,000 into 0.7917. And since 40,000 is constant, I'll just add up all of them. जाओ आगे पक्का. सो आई बिलीव गाइस, आई बिलीव अगर अभी तक कोई डाउट नहीं है और एटलीस्ट अभी तक के नंबर्स हम लोगों को आए, सो वी हैव जस्ट पुट अ टिक ऑन द बॉक्स. सर वी आर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सर्टिफाइड. फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को आता है. अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं और थोड़ा इसके अंदर मस्ती करते हैं. हाउ टू यूज कैलसीज व्हेन द नंबर्स विल गो डर्टी. ओके, now here we will have some tricks. I'll share it with all of you guys. Let's read this. If Kashish invests rupees 1 lakh for 2 years and receives 1,32,250 at the end of second year, compute interest rate. Almost similar sum we had done some time back. मैं तो खाली आपको एक लूप ले रहा हूं फटाफट फटाफट. Come on, आना ही चाहिए आंसर. परसेंटेज दे दो फटाफट. लास्ट टाइम हम लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ रहे थे, इस बार मैं इंटरेस्ट रेट ढूंढ रहा हूं. So my answer would be future value is equal to 1 plus r raised to n, correct? Into present value. So my answer here would be 1,32,250 divided by 1 lakh is equal to 1 plus r raised to कितना बेटा 2. So 1.32250 is equal to 1 plus r raised to 2. बरोबर है. अब बेटा मैं थोड़ा गणित करने वाला हूं इसके अंदर. करना पड़ता है इस सब लोगों के. इधर तक क्लियर? एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट 1 प्लस आर, योर आंसर वुड बी 1.32250 raised to 1 by 2. 2 over here will become half there. I hope everybody understand this. Pakka. 1 by 2 is nothing but square root. So give me answer. Therefore 1 plus r is equal to
1.15 and therefore R is equal to 0.15 or 15%. Easy. Nicely curated sum just to make sure that we do not mess it up. समझा बेटा इधर तक सब लोगों को? पक्का? आया था बेटा 15%? चला मतंगी आया था बच्चों? दिख रहा है यस बोलते ऐसे. चल नाइस. Let me take the lead. Now, just playing with the numbers. Please help me. Don't get scared. If you don't know how to use Calci, please ask. Please do ask. Aneri invest rupees 1,50,000 for 4 years and receives 2,81,083 at the end of 4th year. Compute इंटरेस्ट रेट. सेम थिंग है बट अभी 1/2 के बदले 1/4 हो गए. तो 1/4 हो गया तो थोड़ा दिमाग लगाने का. स्क्वायर रूट कितनी बार करोगे अभी तुम लोग? 2 बार. तो स्क्वायर रूट करो फिर वापस उसको स्क्वायर रूट करो. चेक करो फटाफट आंसर. सो योर माय आंसर वुड बी 2,81,083 is equal to 1,50,000. Here it is 1 plus r raised to 4 and therefore 281,083 divided by 1,50,000 is equal to 1 plus r. Okay. And all of this will be raised to 1/4. तो आपको स्क्वायर रूट 2 बार दबाना पड़ेगा. Therefore कितना रहा बेटा? 1.1699999. तो that will be 17%. So 1.17 is equal to 1 plus r and therefore r is equal to 0.17 or 17%. Clear? 1/4 समझा ना बेटा दीपक? Clear? निश्चय? कंफर्टेबल ना? मयंक आया था बेटा आंसर? No issues. But did you understand the logic? You understand 1/2? You press the square root. And if it is 1/4, so it is twice the square root. So we will press square root twice. मैं लेके आ रहा हूँ अभी बस आपने पूछा ना अब लेके आते थे. चलो डन. Now 1/6 के बदले में आपके पास 1/5 लेके आया हूँ. देखते हैं मजा आएगा. Let's enjoy this now and I'll be happy. Let me see what people are doing. Sagar invests and receives 2,30,304 at the end of 5th year. Calculate interest rate. Oh my god, principal ही नहीं दिया मैंने. Principal value 1 लाख कर दो बेटा, वो अपना constant है. Come on. Give me answer. ये 1,25,000 करेंगे क्या? तो आपको एक अच्छा आएगा और भी. सॉरी 1,25,000 करो इसको. Come on guys. आया? कैलसी नहीं है ना बाहर? नहीं उनके पास. क्या बात कर, मोबाइल यूज कर. वो कैसे यूज करेगा ऐसे? Now guys, you're in this particular situation. I want to see how many of them have answered here. People at home, I'm waiting. Kaushik, no, I haven't got the answer. Anjali ji says 15%. पहले वाले का आंसर. Nice लक्ष्य. सो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को थोड़ा पावर को डर्टी करना पड़ेगा. ये 13 कैसे मटका लगाया तुम लोग ने? अरे वैसा नहीं होता है ट्रायल एंड एरर भाई.
साल में 3 अटेम्प्ट हो गया तो तू क्या ट्रायल एंड एरर करेगा? Now, so in that case, guys, I hope everybody understand. Now, here, what we have to learn. In fact, this is where I was trying to come across. आया था बेटा, जानवी आया था कुछ? शर्मा जी, Shreya, Kaushik. Now this is the game. Let's play. Let's play. Let's understand this, please. Public. ओए, डोबा, इधर देख. अब होगा क्या बेटा यहां पर आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझना है शांति से. माई 2,30,304 इज इक्वल टू 1,25,001 प्लस आर रेस टू 5. ठीक है. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस 230,304 divides by 1,25,000 is equal to 1 plus r raised to 5, and therefore 1 plus r is equal to 1 point what? 8424 raised to 1 by 5. अब ये 1 by 5 in your normal calculation will not give you answer, and that is where you will have to use dirty power. याद है आप लोगों को? इंटर में पढ़ाया था कुछ? याद है? याद सर याद नहीं है, पढ़ा था हम लोगों को, मालूम आप सिखाओ. याद छे? नहीं, मैं सिंपली बताता हूं, बहुत सिंपल है. सो टेक्निकली व्हाट डू यू डू, हाउ डू वी डू डर्टी पावर? सो गाइस, हियर वी आर नॉट अलाउड टू यूज साइंटिफिक कैलसी इन अवर एग्जाम. इफ यू आर गोइंग फॉर अ CFA एग्जाम, और some people, some ma'am have done what? CFP and yes, financial calculator. That calculator you are allowed, but not in CA. So I'm requesting, even if you have or you are appearing CFA, do not practice on that right now, because any which way CA का एग्जाम तो आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा. तो बहुत सिंपल सा चीज है, कोई भी पावर हो सकता है. अभी तो मैंने 1.5 लिखा, इट कुड हैव बीन 0.28596, it could have been 0.4678, so we don't know. So in that case, what we will do, we will use dirty power. What we will use beta? Dirty power. Now what is dirty power? Dirty power क्या बोलता है? मैं आपको किसी का भी स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प कर सकता हूँ. Any power I can help you to solve. So how do we go ahead there? सबसे पहले सब लोग, कितने लोगों को आता है डर्टी पावर इधर क्लास में? ओके, हाँ आता है 4-5 जन को. बाकी सब लोग इधर देखो, मटके वाले भाई साहब आप भी देखो. सर ना हो, उसने मस्त लगाया, 11 से किया, नया है, फिर 12 से किया, फिर 13 से किया. अच्छा, पहले ही 13 किया, वाह बेटा. सो in that case, Meet, what we are going to do is, we'll start with, take 1.8424 in your calci. Take 1.8424 in your calci. 1.8424 in your calci. Okay. Now you will do square root 12 times. कितनी बार? स्क्वायर रूट कितनी बार किया बच्चों आप लोगों ने? 12 टाइम्स. हाँ, कुछ भी एक भी बार लफड़ा किया तो फिर 9 भर चुका बेटा. हाँ, फिर तुम लोग खुद का देखो. फिर 1.8424 स्क्वायर रूट दबाया आप लोगों ने 12 टाइम. कुछ तो भलता ही आया होगा 1 पॉइंट समथिंग, उसमें से -1 कर दो, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. पहले -1 करो माता जी प्लीज. -1 किया. अभी आपके पास जो भी फिगर है ना, उसको हम इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स. ये रुको पावर तो मल्टीप्लाई किया, रुको. हाँ, नाउ वेट, तुम लोग किधर हो अभी? मेरे को इधर बोलो. -1 किया. अब -1 आने के बाद मल्टीप्लाई बाय पावर. 1 by 5. In this case, we have 1 by 5. Power is how much? 1 by 5. मल्टीप्लाई किया 1 by 5. पक्का? अभी जो भी आपके कैलसी पे है, that is not the answer. You will have to add 1. Now you have to go reverse, completely reverse. So plus 1 to this. Plus 1 किया. अब into equal to 12 times. Into equal to 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 ऐसा 12 बार. वन 1.13 आया. मैं वापस सिखाता हूं, वापस सिखाता हूं. छोड़ो, इधर देख, ये बात सुन. ओए, look at this. I've written steps already on the board. So what do we do? Whenever you want to solve something with a power which you are not easily calculating on your phone or on your mobile, on your calci.
तो आपको क्या करना है, यू टेक दैट वैल्यू फर्स्ट इन योर कैलसी. सो फटाफट जिन लोगों को भी नहीं आया वापस एक बार करेंगे. सो विल टेक 1.8424 in your calci. Then you will take square root 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. प्लीज आप लोग गिनो, आपका उंगली फास्ट चल रहे तो मेरे को भर चुकने ना. 12 टाइम्स किया. अब उसमें से -1. अब आपको वो जो पावर था, इट कुड हैव बीन एनीथिंग. इन अवर केस द पावर इज 1/5. सो यू मल्टीप्लाई बाय 1/5. 1 divided by 5. Multiply by 1 divided by 5. Done. Now once you get this value, now what will you do? You will add 1 to it. Plus 1. You got plus 1. Now we are going reverse. So last time हम लोग ने square root लिया था, इस बार into equal to. Once you do press equal to, it will be 1 time. Into equal to, that is 1. वापस into equal to 2. Into equal to 3. Into equal to 4. वैसे 12 बार करो. मयंक 1.127. कुछ तो लाफड़ा की है भाई. 1.13 आया. 1.13 की नहीं आ रहा है भाई. डर्टी पावर है, तुम आंसर डर्टी कर रहे. नाउ दिस इज वेरी फेमसली नोन एज डर्टी पावर्स. हाँ आप लिख के रखो मैडम, आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ेगी. नाउ सो कितना बेटा इधर 1 पॉइंट. सो 1 प्लस आर ओवर योर. मैं आई वुड रिकमेंड एक बार वापस ट्राई कर दो. 1 अभी आर इज इक्वल टू 0.13 or 13%. Guys, these are the steps for dirty power. So you can write down this step. In fact, I would recommend index के बाजू में ना कहीं पे वापस जाके लिखो. हम लोग एक पेज ऐसे बनाएंगे जहां पर ये सारी चीजें लिखेंगे. It can be the first page of your AFM book. All these steps na, which are shortcuts, we will write it down there because this is not applicable for this chapter. This is applicable for all chapters. लास्ट पेज, फर्स्ट पेज, वेर एवर यू गाइज आर कंफर्टेबल. मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि मैं ऐसे बहुत बार बोलूंगा तुम लोग को कि जाओ उधर वापस. रेडी. नेक्स्ट टाइम व्हेन ऑल ऑफ दिस विल कम इन द सम्स, वी ऑल शुड बी प्रो. क्लियर. कॉपी किया बेटा ये. टेक द नेक्स्ट वन. कोमल इन्वेस्ट 20,000 for 3 years and receives 28,476.5625. Compute interest rate. Same, I'm just testing you on dirty power again. चलो, कैन वी. मैम प्रैक्टिस dirty power. So this I answer. This is तो करो. 28,476.5625 is equal to 20,000 into 1 plus r raised to 3. तो ये आंसर आ जाएगा 28,476.67. कितना आ रहा है बेटा ये? 1.4238 raised to 1/3 is equal to 1 plus r. तो नाउ यूल टेक 1.4238. मयंक मेरे को कंफर्म कर बेटा, आया अभी तेरे को इस बार? जिशु क्या नाम बेटा आपका? श्रेय. पीछे दीप. 12.5. वाह, मेरा देश बदल रहा है बच्चों. नो, ऑल्सो यू शुड हैव डन दिस. नहीं अच्छा लगा आपको ये? मैडम के लिए आई विल राइट लेटर फॉर यू इन ICAI. आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउ करवाता हूँ. सो
Yeah, take the calci. Everything has to be done in calci only. Mayank, आया बेटा आंसर? Let's do it together. Okay. So 1.4238 in your calci. Now we will press square root 12 times. You only count. That's it. हो गया 12 बार. अभी ये जो भी आया है ना उसमें से -1 करो. ओके, -1 किया. अभी into 1 divided by 3 because our power is 1/3. ओके, अभी जो भी आया है आंसर +1 करो. +1 1. ओके, now you have to press into equal to, that will be 1 time. ऐसे 12 time. This is 1. No, गया पूरा कैलकुलेशन. into equal to 1, into equal to 2, into equal to 3, into equal to 4. क्या मयंक आया आंसर? यस. minus what? 1/3. 1 divided by 3. Yes. +1. Okay. Into equal to. This is 1. ऐसा 12 बार करने का. Into equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo! So guys, finally we've got it. Yeah. So this is 1.12, 1.1249. So that is 1.125. We'll subtract 1 from it. You will get the answer. Fair enough? Chalo, can we go ahead, guys? Chalo. Tan-ta-dan. Yeah. So you've got answer for 1 plus r. So उसमें से 1 minus करेंगे तो you will get it. Now guys, now. 2 मिनट रुक जाएंगे प्लीज. अब बच्चों, हमारे जीवन में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, डर्टी पावर, ये सब हुए समान. अब हम आपको लेके जा रहे हैं कंपाउंडिंग में. और कंपाउंडिंग कैन बी कंफ्यूजिंग. सो देर आर मैक्सिमम 2-3 areas where student can collapse. I have covered more than that. Okay. So once we finish this round, I think we finished how many sums so far? If you realize, we finished 10. I have 7 more examples that should wind up our complete concept clarity for. भाई कुछ समझा तुम लोगों को? So technically मैंने कुछ सिखाया भी नहीं और बहुत कुछ सिखा भी दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को आगे हेल्प होने वाला है. So today we have not started any chapter, nor I was intending to start any chapter. Anytime I realize that I'll need some base of your inter CA, I'll quickly create. जैसे कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में जितना भी तुमने कैपिटल बजटिंग किया है वो सब है, तो मैंने एक ही सम बनाया है जिसके अंदर पूरा इंटर रिवाइज हो जाएगा. So we will solve that. Any problem we will discuss, debate, and then we will jump on to the final CA. So that's what we've done today. Now, beta, we are entering into the compounding. Guys, as a chartered accountant, it is extremely important that we also understand how the compounding works. And my humble request, any students who's attending live at least, or face-to-face, whatever, if you do not understand anything, please ask immediately. Because some things, हो सकता है कि it was presumed that you knew it, but a lot of time people don't know this. Okay? So I want to welcome you all on that note. फैंटास्टिक क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूं, एकदम सिंपल. आशीष इन्वेस्ट ₹1 लाख फॉर 1 year विद डिफरेंट बैंक्स. एक बैंक उसको देता है 12% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. दूसरा बैंक बोलता है भाई साहब हम कंपाउंड सेमी एन्युअली करेंगे. तीसरा बैंक बोलता है हम कंपाउंड क्वार्टरली करेंगे. चौथा बैंक बोलता है कंपाउंड मंथली करेंगे. पांचवा बैंक बोलता है कंपाउंड वीकली करेंगे. और छठा वाला मेरा फेवरेट है, कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली. It will compound continuously. So all of this is going to be fun. आप एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो और फिर एक एक बैंक के हिसाब से मेरे को फ्यूचर वैल्यू ढूंढने का आफ्टर 1 year.
लिख बेटा, आपको डिग्री मिलेगा ना मैडम, CA। हाउ मेनी इयर्स ब्रेक मैम? 25 years. Wow. Inter you cleared? When did you clear it? 90? Oh, I'm 1990 born. तो माता जी ने जब इंटर दिया तब तुम लोग थे भी नहीं दोस्तों, प्लानिंग में भी नहीं थे। So for all the people online there, we have a very young, inspiring candidate who is learning with us. What's your good name, ma'am? Melissa. Have you copied this? निश्चय तू लिख रहे कि नहीं लिख रहे? चलो, कैन आई? सो गाइस विल कीप इट वेरी सिंपल। सबसे पहले कंपाउंड एनुअली हो रहा है। पहले कंपाउंड का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को क्या? कंपाउंड एनुअली का मतलब क्या? कंपाउंड सेमी एनुअली का मतलब क्या? कम ऑन, हाँ, यू आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, यू हैव टू हेल्प अस। लुक यार गाइस, मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल है। सबसे पहले ना अपन बैंक ए सॉर्ट करते हैं, साथ में ही करते हैं। जो इजी है ना वो मैं साथ में करता हूँ, जो डिफिकल्ट आएगा वो तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है बेटा ना? So let's go ahead. So what did I do? I invest 1 lakh here. Okay, if I have to explain this, and my money is going to compound annually. मतलब एक साल तक उस पे मेरे को 12% मिलेगा, कोई टोक टोक बीच में नहीं आएगा. So it would be 12% year. So obviously my amount over here will be 1,12,000. This is my answer. Bank A 1,12,000. ठीक है? Can we go ahead? Next one. Now guys, what does bank B means? बैंक बी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? बैंक बी ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब हम आपका पैसा, पहले तो ये समझो पैसा ज्यादा कौन देगा, पहले ये समझो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द बैंक और नेक्स्ट टाइम यू मीट समवन, यू नीड टू अंडरस्टैंड. There is one guy, he says that I will give you 12% per annum compounded annually. The other guy says that I'll give you 12% per annum, but I'll compound semi-annually. What does he mean, semi-annually? Semi-annually का मतलब होता है कि भाई साहब हम 6 महीने के बाद आपका पैसा जितना भी अभी तक जमा हुआ है, पैसा प्लस प्रिंसिपल हम वापस री इन्वेस्ट करेंगे. So here when it says compound semi-annually, the whole fund is going to be 12%. I will not get like that. This 12% will be 6% here, 6% here. So you start with 1 lakh. This 1 lakh in 6 months will become how much? 1 lakh in 6 months will become how much? Not 1,12,000. Because only 6 months. So I'll get 1,06,000 here. So I'll get 1,06,000 here. And this 1,06,000 pe I'll get another 6%. So if I get another 6% here, give me answer now. 1 lakh, 1,12,000, 1,12,368. क्योंकि आपका पैसा वापस री इन्वेस्ट हो गया बेटा. अगर एनुअल कंपाउंडिंग होता तो सिर्फ 12,000 मिलता, बट इसके अंदर आपको मिला 12,368. बट वन सेकेंड, हाउ डू वी इन एग्जाम मेरे को ऐसे लाइन वाइन नहीं बनाएंगे हम लोग, है कि नहीं? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. सो हाउ डू वी गो अहेड? सो इट्स द सेम थिंग, ओनली प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर. ओरिजिनली इट वाज रेज टू एन. नाउ प्लीज पे अटेंशन. व्हाट विल आई डू? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2. क्यों 2? क्योंकि हाफ मिलेगा, और ये कितनी बार कंपाउंड होगा? साल में 2 बार. तो मैं इसको रेज टू 2 करेगा. 1 प्लस आर अपॉन 2 रेज टू 2. So this will be my answer, and therefore my answer would be your 1 lakh into 1 plus 0.12 divided by 2 raised to 2. The answer would be 1,12,368. I hope everybody understand. समझा?
Clear? Now, let's keep going. Ekdam? Now, get your answers. Come on, guys. Compounded quarterly. Bank C compounded quarterly. You can simply use the formula now. Bank C, if it is compounded quarterly, your answer would be 1 lakh into 1 plus R divided by 4. So your 0.12 will be divided by 4 and raised to 4. Because it will multiply 4 times. है ना? कितना? 1,12,551. Figures on the board are subject to market risk. Huh? Please confirm before copying. Come on. Keep going. Go for Bank D now. Bank D is what? Compound monthly. कितना? मंथली में कितना आ रहा है? 112682. Then goes your Bank E. Guys, be smart enough in using your calcs. 0.12 divided by 52 raised to 52. तो आप 13 तक कर सकते हो. फिर 13 इंटू इक्वल टू विल बिकम 26 इंटू इक्वल टू विल बिकम 52. बेचारी उंगली पे रहम करो. तुम ऐसे इक्वल टू 52 कर दिया गया तो जयकारा शेरा वालिदा साचे दरबार की. हाँ. बैंक ऐप साथ में करेंगे. क्या नाम है आपका? दो दीप है. 2 दीप है और 1 दीपक है. चल आयुष. 112 enough. I'll show you. See, and that is what I'm saying, but please keep asking so that it is easier. First of all, 0.12 divided by 52 in your calci. 0.12 divided by 52 in your calci. कितना आ रहा है? 0. जो. Wait, no, wait. Wait, divide किया. Plus 1 कर दो. So now technically it is 1 lakh. In your calci, if I'm not wrong, it would be 1.0023. 1.0023. Correct? Raised to 52 we need to find out. So this is clear. Clear your calci first. Clear your calci. Now let's do it. So 1.0023. Okay.
into equal to, this is 2 time, correct? Equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. बस 13 हो गया. Now into equal to, this is 26. Now again into equal to, this is 52. कितना रहा है? 1.1 lakh into 1.1269 आया. मयंक आया था 1269. ठीक है वो. सो योर आंसर 1,12,690. वो थोड़ा डिफरेंस है इधर. दैट इज बिकॉज ऑफ द डेसिमल्स वी कंसिडर्ड. समवेयर वी टुक फुल कैलकुलेशन और हाफ कैलकुलेशन. दैट मींस इट्स फाइन. मयंक समझा बेटा? अच्छा, इसके अंदर यू कुड हैव डायरेक्टली गॉन फॉर डर्टी पावर ऑल्सो. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कुड हैव ऑल्सो गॉन फॉर डर्टी पावर. मीट आ रहा है बेटा? एकदम क्लियर. See, I don't know whether you are liking this or not liking this. These are very stupid questions which we are solving today. But all this stupidity will help us. Clear? इधर तक clear? जाऊं अभी continuous में आओगे आप? Now what is continuous compounding, guys? And if you are doing CFA, then so it is even more important. Please pay attention. Because it is only our Indian chartered accountant where in majority of the sum we usually use discrete compounding. Discrete compounding means annual compounding, simple compounding, जो बोला है वही. But then there is a concept of continuous compounding. A lot of time they will give you the term. They will actually tell you कि boss this is continuous compounding. और जब वो लोग continuous compounding बोलेंगे तो हमें समझना है continuous compounding का meaning क्या है. What is continuous compounding? Now if you invest in market, the market is continuously compounding. वो लोग क्या करते हैं? आपका पैसा every hour, every minute, every second, every microsecond, it keeps on compounding. So then it will continuously happen. So technically, if you ask me, 2 मिनट रुक जाना बेटा, बाद में कॉपी करना प्लीज फॉर गॉड से. If you ask me, I would go for बैंक F. कैसे करूंगा बैंक F? मैं बैंक F लूंगा 1 लाख into 1 plus 0.12 divided by infinity. Infinite times ब्रेकअप करना पड़ेगा ना. जब हम लोग कंपाउंडेड सेमी एनुअली था तो आई वाज डिवाइडिंग बाय 2, क्वार्टरली था तो डिवाइड बाय 4, वीकली था तो डिवाइड बाय 52. नाउ योर दिस इज नॉट आवर्स, नॉट वीक्स, नॉट आवर्स, नॉट मिनट्स, नॉट सेकेंड्स. इट इज एवरी माइक्रो सेकेंड्स. सो देयरफॉर डिवाइड बाय इनफाइनाइट and raised to infinite. This, your financial calculator will not help. This will also not help. And that is where the answer to this is 1 lakh into, this is exponential value and therefore we'll give it a year. So every time it is continuously compounding. In any sum there might be. We'll see that in security valuation, we'll see that in portfolio, we'll see that in derivative, we'll see that in interest rates. Anywhere we are seeing this. If it is continuous compounding, आप क्या यूज करोगे? E raised to RT. What formula will you use बेटा? E raised to RT. अब 2 मिनट रुक जाना प्लीज. We are just building up this concept. Now 1 lakh into E raised to RT. अब इधर हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को ई पता होना चाहिए कितना है. अब बहुत बार एग्जाम में ई रेस टू आरटी ना ओनली दिस मच फैक्टर, ओनली दिस मच, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया ना उसका वैल्यू वो लोग डायरेक्टली दे देंगे. थैंक्स टू आईसीआई. वो बोलते कि आप लोगों को इतना मगजमारी करने का जरूरत नहीं. दिल डायरेक्टली गिव यू ई रेस टू आरटी का वैल्यू और वॉट एवर दे वॉन्ट टू गिव इन दैट फॉर्म. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल प्ले विथ यू गाइस, दे विल नॉट गिव यू वैल्यू. एंड इफ दे डोंट गिव यू वैल्यू तो आपके पास अभी कोई ऐसा टर्म नहीं है. और इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा ई का वैल्यू क्या है. सो आई एम नाउ गिविंग यू द वैल्यू फॉर ई.
व्हाट ई क्या बनाने के क्या बने. नाउ व्हाट इज ई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? द वैल्यू ऑफ ई वुड बी easier way of remembering in 27, 18, 28, 27, 18, 28. Now how will you remember this? Depends. Few suggestions. Keep your WhatsApp password 271828. The best way to remember. I'm not saying mobile password, वरना फिर सब लोगों का मोबाइल में सेम हो जाएगा पासवर्ड. So mobile password you keep what you want to keep. WhatsApp password you can keep 271828. आपको ये याद रह जाएगा. वरना फिर तुम तुम्हारा कौन सा भी बेसिक लॉजिक लगा सकते हो. मैं जब 27 साल का था, मैं 18 दिन के लिए नौकरी पे गया, बट 28 साल पे मैंने छोड़ दिया. कुछ भी तुम लोग स्टुपिडिटी यू कैन थिंक ऑफ, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ ई 271828. बट इसके अंदर बीच में 2 के बाद डेसिमल है. So it is 2.71828. This is your value of E. This is one way of remembering. One thing you'll have to remember. This is another dirty trick. So dirty trick हम लोग ने सीखा ना, उसमें you'll have to remember value of E. Now wait, hold on. यात्रीगण कृपया ध्यान दे, है ना, गाड़ी भाड़ में जा ही रही है, रोको उसको. So 271828. Now it is 271828. Now how will I get this answer? So my answer over here would be 2.17. Sorry, मैं भी भूल गया. Now 271828 raised to r कितना बेटा 0.12 and t is 1 year, so into 1, so it will remain 0.12. t is 1 year ना year. ओहो समझा बेटा. So 2.71828 raised to 0.12. Now how will I solve this? Now this I will solve by dirty trick. So 1 lakh तो है ही, 2.71828 into equal to 12 times into equal to किधर, पहले स्क्वायर रूट 12 टाइम्स ना. करो मेरे को इसका डर्टी ट्रिक से अभी आंसर दे दो, फाइनल आंसर. करो, मेहनत करो. कितना आंसर? So 1 lakh into 1 point. So answer would be 112751. Correct? So the value of E goes into your secret box, secret page, whatever you maintain. 271828. 271828. That is the value of E. Clear? Enough? डन बच्चों. नाउ ये लिखा तुम लोग ने. अभी इधर एक और सीक्रेट बॉक्स है मेरे पास, विच आई कैन शेयर विथ ऑल ऑफ यू गाइस. दैट इज मोर इजियर, फास्टर, एंड आई बिलीव नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू वुड रेदर प्रेफर दैट. If you want to find out the value of e raised to rt, okay, if I want to find out the value of e raised to rt, e raised to 0.12, so what will I do? 4 steps. Step 1, I'll take 0.12. Step 2, I will divide this with another magical number which is 4096.
आई रिपीट, ये ऑलरेडी सेल्फ सॉल्व्ड है फाइनली। तो आप जितना मेहनत कर रहे हो ना वो सब डायरेक्टली हो चुका है। और ये जो भी आएगा आपको स्टेप 2 में, स्टेप 3 में यू एड 1 टू इट +1, एंड स्टेप 4 में into equal to 12 times. So if you follow these 4 steps, things will be even easier and faster for any e value if you want to find out e raised to r. Let's try this. Take 0.12 divided by 4096. 0.12 divided by 4096 +1. +1. Now whatever you get it into equal to 12 times. Everybody will try it. Madam, you are doing equal to 12 times. Oh, Mataji, I caught you red-handed. Into equal to 12 टाइम करने का है. थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना माताजी तो जाएगा आटली वाटली फुटली. You have the answer. Eureka! So, बच्चों, this is simpler. This is faster for the E rather than remembering that 27, 18, 28. This is 4096 is easier to understand. And best part is ये तुम लोग FR में भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज करते हो, जहां पर भी तुम्हें E आएगा लाइफ में. दोनों याद रखो. E का वैल्यू अगर कहीं पे एज इट इज भी रिप्लेस करना है तो भी 27, 18, 28. But more importantly, if I want to solve it, so I'll take e to the power something. We will directly go for this shortcut. Clear? Sure? थोड़ा लग रहा है ना अभी तुम लोग फाइनल में आ गए. जाओ आगे. अब बच्चों मेरे पास कुछ है नहीं ज्यादा करने के लिए, मैं सिर्फ कंपाउंडिंग के साथ खेलने वाला हूं. आई एम जस्ट गोना प्ले विथ कंपाउंडिंग एंड ट्रस्ट मी देयर आर प्लेसेस वेयर यू विल फॉल डाउन. ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड मोर इंपॉर्टेंटली नहीं समझेगा ठीक है पूछो. ओके, जाओ मैं आगे. सो ये था हमारा पास बैंक ABCDEF. आई लव दिस एग्जाम्पल. लेट मी टेक इट दिस. राधे इन्वेस्ट ₹1 lakh at 10% per annum, compounded continuously for 6 months now. Give me answer. Ready? कितना बड़ा? 1,05,01. कर कैलसी पे दीप. देखो ई का वैल्यू आ गया ना बेटा, तो तू कर सकता है ना. 4096. अच्छा वो इंटू इक्वल टू 12 बार. नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं है. बोल दीपक. 1,05,127. इधर देख बड़ा. So I'll go for 1 lakh. So the answer would be 1 lakh into E raised to 0.1 into T. T is not 1 year. This is 6 months. So 6 by 12. Or you could have written half. So therefore your answer would be 1 lakh into E raised to 0.05.
खत्म गेम. So now you take 0.05 in your calci. 0.05 divided by 4096. 0.05 divided by 4096 plus 1 into equal to 12 times. 1.05127. Guys, is it correct? Oh, Eureka, ma'am. Melissa is doing good. 1,05,127. Done, guys? Sure. Let's the game keep going on. So this is step 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4. ठीक है. Done? Huh. I'll give you everything you want after lecture, don't worry. सब ऐसा लिख के आपको देंगे प्रॉपरली, ठीक है. हाँ, उसका 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा रोज का. ओके. Yes. Wow. So, can we go ahead, guys? Let's go. If future value after 3 months is 45,000, the rate of interest is 12% per annum compounded continuously. Compute present value. Very easy, guys. Let's get it. Hello, Sarji. What's your good name? Are you sure? क्या बात है. आपको कितना करने का है? 3-4 और है. बोर हो गया आपको? अरे यार, कोई गाना गा दूं मस्त वाला? What? हाँ. Nonsense. Come on, guys. Come on. $40. Come on, don't give up. So this is future value is 45,000, madam, and present value we don't know. Present value into e raised to rt this will be. So my r is we know. R कितना है यहाँ पर? 0.12 into 3/12. So my 45,000 into present 45,000 is equal to present value into e raised to 0.03. Now 0.03 divided by 4096 plus 1 into equal to 12 टाइम. याद है ना? 27, 18, 28 से. हाँ, future value is 45,000. Future value is equal to present value into 1 plus r raised to n. तो 1 plus r raised to n के बदले हम लोग क्या ले रहे हैं? ERT. है ना? बरोबर है बेटा? क्या नाम है आपका? तो मुझे क्यों पराजय कर रहे हो? नो. कैन वी? चलो. सो ये आ गए. ओ, बड़ा हो गई है. 45,000 इंटू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू कितना रहा बेटा? ये 1.03045. Therefore present value is equal to 45,000 upon 1.03045. सॉरी 1.03045 बराबर है ना? कितना रहा है? 43. एनफ. डन. जाओ आगे. अप फॉर द न्यू राउंड ऑफ मस्तीस. चलो, मजा आएगा. बहुत सिंपल है. पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छी तरीके से. Bank A offers 12% per annum return compounded semi-annually. Bank B offers 11% per annum
compounded quarterly. Compute effective annual rate if amount invested is 1 लाख. बेटा दो बैंक है, 11% 12%. ऑब्वियसली मुझे क्या लगेगा कि भाई मुझे 12% वाला ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बट 12% वाला बोल रहा है कि भाई साहब मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली करूंगा, और जबकि 11% वाला क्या बोल रहा है, भाई साहब मैं कंपाउंड क्वार्टरली करूंगा. सो योर वी हैव टू टेक अ कॉल विच बैंक इज गुड एंड कंप्यूट इफेक्टिव एनुअल रेट. मतलब टेक्निकली अगर ये कंपाउंडेड एनुअली क्वार्टरली नहीं दिया होता तो मेरे को एक साल का क्या रेट पड़ रहा है. ठीक है बेटा, सो गो गेट इट. सबसे पहले आप मेरे को आप सिंपल रखो, आप कुछ भी मत करो, आप मुझे ये बोलो कि दोनों बैंक में से पैसा कितना रहा है. एनुअल रेट हम निकाल लेंगे, इफेक्टिव एनुअल रेट. हाउ मच डू आई गेट मनी इफ आई इन्वेस्ट इन बैंक ए, हाउ मच डू आई गेट मनी इफ आई इन्वेस्ट इन बैंक बी. जस्ट गेट मी दैट मच आंसर. What does bank A offers and what does bank B offers? That's it. If you can give me that much. फोटो लेने राहुल से मोकला. So here I'll start. So this is my future value is equal to present value into 1 plus r raised to 2 divided by 2 raised to 2, and here my future value is equal to present value into 1 plus r divided by 4 raised to 4. अब यहाँ पर कितना है बच्चा, 1 लाख into 1 plus 0.12 divided by 2 raised to 2, and here it would be 1 lakh into 1 plus 0.11 divided by 4 raised to 4. Give me answer. So I think यहाँ पर आ रहा है रुपीज 1,12,360 और यहाँ पर आ रहा है 1,11,460. 1,11,462. Clear? Everyone? नहीं समझा? Now, how much is my effective annual rate? How do I get effective annual rate? तो मुझे आराम से मिल जाएगा. मेरे को एक साल का कितना मिल रहा है? सो बॉस मेरे को एक साल के बाद 1,12,360 मिलेगा. मैंने इन्वेस्ट 1 लाख किया था टू द बेस ऑफ 1 लाख. Similarly, here also it will be 1,11,462 minus 1 lakh divided by 1 lakh. So here my answer would be what? 12.36 into 100 you can do. 11.462%. Fair enough? Are you sure? लीला बेटा नंतर कब समझा, बट ट्राई किया ना, मतलब यू आर ट्राइंग ना. नाउ जाओ आगे. In the next round. Now guys, same thing. Alternatively, we could have computed faster. I don't want, because this time they have given me that I have invested 1 lakh. अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर वो लोग 1 लाख नहीं बोलेंगे कि इन्वेस्ट किया और डायरेक्टली अगर एनुअल रेट पूछेंगे तो भी ये यूज कर सकते थे. बाय अज्यूमिंग एनी रेट, आप कुछ भी लो, 1000 इन्वेस्ट करो, 10,000 करो, 5,000 करो, you take present value, future value divided by present value, you will get the answer. But we could have done this faster. So I want to conclude formula for effective annual rate. Okay, so my formula for effective annual rate will become what? My effective annual rate is nothing but 1 plus r upon n. 1 plus r upon n raised to n minus 1. And what is n? N is number of time it will be compounded.
number of time it will be compounded. Correct बच्चों? Hello. So you're in case of bank A and bank B. So this was 1 plus R कितना था? 0.12 divided by 4. नहीं, sorry, my bad. 2 raised to 2 minus 1. And in case of bank B, it was 1 plus 0.11 divided by 4 raised to 4 minus 1. कितना रहा इधर? 12.36 और इधर सेम, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. કેટલા થઈ ગયા? હા હા હા. क्लियर एवरीवन? सब जाग रहे सर? अभी तक जाग रहे. मैंने उसको पूछ भी लिया 2 बार कि राहुल सर को फोटो भेजना है अपने. अभी देखो देश बदलेगा सर. रिजल्ट बदलने का है तो देश भी बदलेगा. आपका 2 चैप्टर बाकी रखो, मैं सुधर के भेजता हूं आपके पास. Okay guys, so here now I hope everybody got it. So one biggest learning here which we are taking is effective annual rate. How to calculate effective annual rate. Is this fact very clear? Now let me take you to the next one. Guys, this is my favorite. Please शांति से करना. अभी मैं ये आपको करने दूंगा. बड़े हो गए हो अभी आप. लास्ट के 3 सम बचे हैं. Okay, for the game which we started playing. So I'm expecting people to get me the answer. Simple है. Bank A offers 12% per annum. Compounded semi-annually. Bank B offers 12.36% per annum. Compounded annually. Compute amount to be received after 6 months. If 1 lakh is invested. Amount to be received after 6 months I want. एक बैंक 12% पर एनम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, एक बैंक 12.36% पर एनम एनुअली कंपाउंडिंग. आपको ढूंढना है इधर आंसर फटाफट. वन गाइस एवरीवन, फैंटास्टिक सम है, बहुत मजा आएगा. श्योरली कुछ सीखेंगे हम लोग इस सम में. चलो 2 minutes and I am taking the answers from people. Online everyone. In the meantime, bank A, bank B दोनों बोलना है बच्चा. Your answer has to be bank A and bank B both. How much will bank A give? How much will bank B give? I'll call you post class for this. Very nice, Hit. Superb. Kaushik, no. You are giving me answer after 1 year. I want after 12 months. Oh, sorry, after 6 months. Your answer you are giving me, Kaushik, is after. Rishi, I think it's wrong. Lakshya, wrong. Yukta, very nice. Dhruv, good, very good. Sujal, कुछ तो लफड़ा गया है. I don't know, Divya, you confirm. मेरे को क्वेश्चन पूछ रही हो. Matangi, this is one bank. What about the second one? दोनों का हो तभी लिखो यार तुम लोग. Manaswi, something's wrong. Read your answers again. Which bank? Diya, this is which bank? Sure. Now,
वेरी नाइस दिया. ओके. नो रीना, बोथ रॉन्ग. ओम रॉन्ग. अर्पिता नो. लक्ष्य वो तेरे को देखने का आंसर. चलो. Yes, let me go to my financial planner. Have you tried? So rude. Scared of home. इतना मैं तो भड़कता भी नहीं. आयुष्य वार काहीतरी कुछ दो अच्छा आंसर. 1,06,000 and 1,06,180. I think this is the most favorite answer. How many people have got 16? This answer 106,106,180. Most of them have got this. Okay. सेम. मैं तेरा नाम भूल गया दोस्त. अजिंक्य बोल. सेम. नाउ मयंक किया नहीं, कुछ भी नहीं किया. इधर देख, बहुत सिंपल. इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करो बच्चों. आई एम टेलिंग यू the one thing which you guys can do good today at home is, if you are not able to get to most of them, please interpret what does this mean. All these questions का meaning देखो. And the difference in your foundation, inter and final is there you guys have done a lot of maths, and here we are not doing maths. This is life. Your client will ask you such questions, you need to answer them. So my client is asking me, I'm investing in bank A, it giving me 12.36% return, bank B this way, how do I deal with it? So guys, here एक चीज समझो बेटा प्लीज. सपोज मैं पूछता आप लोगों को दोनों बैंक के बारे में, बैंक ए और बैंक बी. प्लीज पे अटेंशन, मजा आएगा आप लोगों को. बैंक ए एंड बैंक बी. लेट्स फॉरगेट 6 months. लेट्स टेक आफ्टर 1 year. Let's take after 1 year. And if I do it after 1 year, then bank A is compounded semi-annually. तो यहां पे वो लोग क्या करेंगे? I want everybody to understand. It will be 6% year and 6% year. Okay, I'm locking after 1 year. So I'll invest 1 lakh year. So this will be 1,06,000 year and 1,12,360 year. Correct? So after 1 year, this bank will give me 1,12,360. The one of the way we could have done is 1 lakh into 1 plus कितना है 0.12 divided by 2 raised to 2. Correct? This is how you would have got it. Hello? So 1,12,360. This is in case of bank A. Bank B is even more simpler. Bank B बोलता है मेरा तो compounded annually है. Bank B बोलता है mine is compounded annually and I'm paying 12.36%. So in that case my answer would be 1 lakh into 1 plus 0.12 raised to be nothing, multiply be nothing, or in your case this is 1, this is also 1, because this will be compounding only once, raised 1, and my answer remains here 1,12,360. मतलब एक साल के बाद ये मेरे को 1,12,360 देगा और एक साल के बाद ये भी मुझे 1,12,360 देगा. सो दोनों बैंक एक साल के बाद सेम ही, मेलिसा प्लीज अंडरस्टैंड, कॉपीलेटर, दोनों बैंक एक साल के बाद 1,12,360 ही देने वाला. ये तो क्लियर हो गया. बोथ बैंक, अगर दोनों बैंक एक साल के बाद 1,12,360 देगा तो 6 महीने के बाद दोनों अलग कैसे दे सकता है? So technically speaking, now look at the mistake which people have done, and this is a very common mistake which will also allow me to give you a very good conclusion for something in finance which I want everybody to understand. Now here, after 6 months, please try to understand. So in this case, it would be 1 lakh, 1 plus 0.12 divided by 2. Rate को तो मैं divide by 2 करूंगा ही, बट रेस टू 1 ही करूंगा. क्यों 1? क्योंकि एक ही बार ना, क्योंकि मैं 6 महीने में पैसा विड्रॉ कर रहा हूं. आई एम विड्रॉइंग मनी इन 6 months. नो, सिंस आई एम विड्रॉइंग मनी इन 6 months, इट विल बी कंपाउंडेड ओनली वंस एंड रेट विल बी हाफ ऑफ इट. इज दिस क्लियर? पक्का एवरीबॉडी? नाउ दिस विल गिव मी 1,06,000. तो बाय ऑल maths, whatever you apply, if you give 1,06,180 here,
देन बेटा अटली बटली फुटली, वाई? बिकॉज तो मतलब ही नहीं, सब लोग ऐसे ही बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। आपका यहां पर है ना बेटा गेम, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आप लोग ने क्या किया, ब्यूटीफुल थिंग, वेरी ब्यूटीफुल गाइस। आप लोग ने इधर भी 1 लाख लिया, 1 प्लस 0.1 पॉइंट, अरे यार क्या हो रहा है इसका, हाँ 1 प्लस 0.1236, आपने इसको डिवाइड बाई 2 किया, रेस टू 1 किया, ये नहीं होएगा बेटा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और अपने फेवरेट लैंग्वेज में बोलूं तो दिस इज गार्बेज गाइस। Why this is garbage? Because please understand when you go to the bank, how the bank will deal with you. सपोज आप बैंक के पास जाते हो, बैंक ने आपको बोला मैं आपको 12.5% इंटरेस्ट दूंगा, आपको 1 साल पैसा रखने गए, तो आप बोले चलो 12% पकड़ो। आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला आपको मेरे को 12% रिटर्न है, यस बोला हाँ 12% रिटर्न है। कितने साल का? 1 साल अगर आपने रखा तो 12% रिटर्न है। नाउ यू वेंट आफ्टर 1 मंथ, आप बोलते हो बैंक नहीं 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 मेरे को मेरा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो आपके हिसाब से मेंटली आप लोग क्या सोच रहे हो, 12% के हिसाब से 12 महीने का 12%, मतलब 1 महीने का 1%। तो बैंक शुड गिव यू 1,01,000, बैंक विल गिव यू लाफा, बैंक विल गिव यू 1 लाख, और 1,000 के बदले वो 200 300 400 देगा आपको। ही विल नॉट गिव यू फुल 1,000, क्योंकि वो 12% सिर्फ तब होता इफ योर मनी वॉज इन्वेस्टेड विद द बैंक फॉर 1 year. You are premature withdrawing it, so bank could not earn that much return on your money. Bank will not give you. Are you understanding? So when it is defined, compulsorily defined that it is compounded annually, तो रूल क्या बोलता है पता है आपको? रूल क्या बोलता है? Okay, let me do it this way. If effective annual rate is given, we will never divide rate by n. We will only alter power. Now this is $100 million statement guys, $100 million statement, फ्री में दे रहा हूं आप लोगों को मैं, but this is $100 million statement. If effective annual rate is given, we will never divide. So technically यहां पर what will I now do is, I want everybody to understand again, यहां पर बेटा, यहां पर when I am doing it, this 1 lakh into 1 plus 0.1236 बराबर, इसको आपको डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये आपका इफेक्टिव एनुअल रेट है, ये टूटेगा ही नहीं। अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको एग्जैक्ट हाफ नहीं मिलेगा। पहले हम लोग क्यों डिवाइड बाई 2 कर रहे थे बेटा? पहले हम लोग डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोला था मैं आपको 12% दूंगा, वो भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो वो ही वॉज ओके 12%, कौन से परस्पेक्टिव के हिसाब से? 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से। सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, what will you guys do? I repeat, what will you guys do in such kind of situation guys? आप चेंज क्या करोगे पता है? You will change the power. You will change the power. So this I am going to get 12.36 for 1 year. And if it is not 1 year, then I will do 6/12 year. Raised to 6/12. This will be raised to what beta? 6/12. Are you all understanding this? Everybody is understanding this? Sure? जाओ बच्चों में आगे. So now my answer over here will be raised to 6/12. Always change only what? Power. Always change only power. No, this is the thumb rule. This I'll give you. I have already written it. I will allow you to copy. So now beta, now this, how do I deal with this? So this will be 1 lakh. This will be 1 lakh into 1.1236 raised to 0.5. 0.05? No, raised to 0.5 na? 0.5. Come on, use your dirty power and get the answer now.
करने दे, सब लोग को करने दे. 1.1236. बोल बेटा. कर सकते, वो भी कर सकते, जो भी है, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर रूट करोगे तो भी आएगा 1.1.06. So this has to be 1,06,000. Are you understanding this? And guys, if you had done it this way, पहले जैसे किया था, I would love people to copy garbage. Write down garbage there. This is wrong. A lot of people have done this. Please अच्छी तरीके से उधर लिखो उसके ऊपर. बोल बेटा. हाँ, पूरा ऊपर जाता हो. आप ये क्या कॉपी कर रहे हो? स्टेटमेंट के लिए देता हूं 2 मिनट. समझा बट अभी आप लोगों को? एंड व्हेन वी विल डू दैट, वेन एवर दे हैव टोल्ड अस इट इज कंपाउंडेड एनुअली. अगर कंपाउंडेड एनुअली बोला है ना, या इफेक्टिव एनुअल रेट दिया है ना, तो वी विल नॉट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय n. वी विल ओनली चेंज द पावर. क्लियर? दिया ये आपको पता था कैसे मटके में आ गया लॉजिकली, कि चल 1,07,6,000 ही तो आना चाहिए, आ ही कैसे सकता है? तो अनम्यूट अनम्यूट. ओके, सो यू आर अवेयर कि इसको 0.1236 को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है. That very nice, very nice, very nice. Done? Clear? समझा बट? So the whole idea of this session is to place the small things in your head nicely. मीत समझो बेटा. जय हो. जय तो कौन से ब्रांच में था पहले? हाँ उधर. यस, मैं वही बोला, देखा है इसको. Mark this important, huh, guys. You should know when to come back to this again. हाँ, 10 times, don't worry. But something like this which I have to repeat again and again, we'll do it after class. Okay? So always that is practice perspective. Conceptually, if you haven't got something, then I'll explain it immediately again. Clear, bacho? Can we go ahead? There was 15, so only 2 more to go. Can I? So, guys, take this. अभी इजीली आ जाएगा, बहुत जल्दी. टाइम पास ही है, क्योंकि जो मेजर पार्ट था वी हैव क्रॉस्ड इट. Investment amount is rupees 1 lakh for 6 months. Calculate future value if 20% per annum compounded semi-annually, 20% per annum compounded annually, 20% per annum compounded continuously, 20% per annum compounded quarterly, and 20% per annum. कुछ भी नहीं दिया है. ऐसा भी कभी कभी इंस्टीट्यूट करेंगे, कुछ देगी नहीं. 20%.
बहुत इजी है, सब कुछ आ जाएगा। चलो, कैन वी? So first, ma'am, let's do it together. So if this is 20%, we are calculating future value. So in case of first one, in case of first one, one lakh into 1 plus 0 point how much? 0.2 compounded semi-annually है, तो can I say it will be divided by 2? Raised to what, guys? Raised to 1. Why raised to 1? Because we want it after 6 months only. So my answer over here would be 1,10,000, everyone. Nice. Second one. So this will be 1 lakh. And this is 1 plus 0.12 divided by 6 by 12 is bar raised to 6 by 12. Because this is compounded annually, guys. Since it's compounded annually, it is effective annual rate. Answer. Oh, sorry, 0.2 है, 12%. कितना बेटा? स्क्वायर रूट। बोल बच्चा। 109,545,545,544। 1 रुपए के लिए झगड़ा मत करो, मेरे से ले लेना। नो, दिस इज 1 lakh into e raised to 0.2 into 6 by 12. So this will be 1 lakh into e raised to 0.1. 0.1 divided by 4096 plus 1 into equal to 12 times. 1 lakh 1,10,000 500 and 570 517. Super. So let's go for the fourth one. Guys, इसमें मजा आएगा. Now this is 1 lakh compounded quarterly into 1 plus 0.2. 0.2 will now be divided by 4 क्योंकि पूरे साल में वो 4 बार वो होगा. बट यहां पर रेस टू कितनी बार करेंगे क्योंकि हमें पैसा 6 महीने बाद चाहिए. So 0.2 divided by 4. Every quarter will get 5%, 5%, 5%, 5%. But it is compounding semi-annually. Sorry, I want to withdraw money after 6 months. So I will raise to how much? 2. ये समझा मयंक? I repeat. What is this, beta? This is compounded. If it is compounded quarterly, please understand. Since it is compounded quarterly, 1 plus R divided by 4 quarters. But I am withdrawing money after 6 months. So 1 plus R divided by 4. How many times will I get this? Twice. It will compound only twice because I am withdrawing half yearly. So this will be raised to 2. समझा? पक्का? जिसको भी नहीं समझ रहा है ना, लिखो हाँ 4 quarters and withdrawn in 2 quarters. है ना? So now my answer will be कितना है ये? सच बोल. 1,10,000. अजिंक्य समझ रहा है बेटा? क्या? चुप रे. ना फिफ्थ बोलता है 1 क्वार्टर में कितना होता है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये लास्ट में तो कुछ बोला ही नहीं है ब्रो. अब ये है ना, ये एकदम ऐसा कैजुअल है. बोलो बी ट्रीट इट लाइक बीकॉम. Okay, here you have to treat when they don't say anything, it is like BCom. So what will you do? You will take 1 lakh into 20% for 1 year. So 6 months, how much? Into 1 plus 0.2 into 6 by 12 भी कर सकते हैं आपको इधर, है ना? So this is 1 lakh into 1.1. 1,10,000. समझ में आता है बेटा सब लोगों को? एकदम क्लियर? सच बोलो.
डन 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 एवरीवन। अब कुछ भी नहीं है, अभी तुम लोगों को मेन कंपाउंडेड में क्वार्टरली, एनुअली, कंटिन्यूसली एंड देन हाउ टू ट्रीट इफेक्टिव एनुअल रेट, दैट वाज द गेम। इफ वी आर थ्रू विद दैट वी आर सॉर्टेड। ओके, निश्चय बोल। अभी देख, मैं विदाउट आस्किंग डाउट शुड आई सॉल्व योर डाउट? आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू आस्क। हाँ हाँ, यस। नहीं आएगा, ट्राई किया तूने? नहीं आएगा, इसमें करते ना। चलो ये बोलता है भाई साहब हम कंपाउंडिंग डेली करेंगे, करो कंपाउंडिंग डेली एंड यू विल विड्रॉ आफ्टर 6 months, है ना, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो ये ले, सो इफ यू डू 1 lakh, सो व्हाट विल यू डू? तो आंसर वुड बी 1 lakh into 1 plus 0.2 divided by 365, because you are compounding this thing and you are compounding daily, right? So if you are compounding daily you multiply with 182, correct? और अगर तेरे को एग्जैक्टली हाफ करने का है 6 months के, तो 182.5 ले into 182.5, सॉल्व दिस। कैल्सी नहीं? अरे यार तो ऐसा डाउट पूछते फिर कैल्सी नहीं लेके आता है ना। कर रहे सब लोग लग पड़े तो टेंशन मत ले, अपना टीम देगा तेरे को आंसर। धड़ा धड़ दिन तड़ाक दिन तड़ाक दिन तड़ाक दिन तड़ाक दिन तड़ाक। 5-1। सो बच्चू निश्चय 110,512 आ रहा है। दिस इज बैंक कंपाउंडिंग डेली। और उधर आ रहा था 517। ऑब्वियसली हाथी घोड़े का फर्क नहीं रहेगा, बट कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली हैज टू बी हेवियर देन कंपाउंडिंग डेली। क्लियर? एंड प्रोबेबली बिकॉज यू आर नॉट हैविंग कैल्सी, तो वो कैल्सी में कुछ हुआ होगा, डोंट वरी, बट द कॉन्सेप्चुअल रिमेन सेम। कितना मस्त क्वेश्चन है देखो बच्चों। आप 6 महीने में पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अगर चीजें कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रही है, इफ यू आर विड्रॉइंग मतलब ओरिजिनली ओनली सेमी एनुअली, तो यू विल टेक होम 1,10,000। बट इफ इट वॉज सपोजिंगली 20% पर एनम, कंपाउंडेड ऑल्सो एनुअली, और आपने बीच में से निकाला, तो आपको पूरा 10,000 भी नहीं मिलेगा, you got less money. But suppose it is compounding continuously, तो then you will get highest of all, 1,10,500 रुपये और भी ऊपर मिला। But if it is compounding quarterly, तो year you will get more than semi annually. So 1,10,000 आपको सेमी एनुअली में मिल रहा था, यहां पर आपको 250 और भी ज्यादा मिला, और कंपाउंडेड डेली में तो उससे भी ज्यादा मिला, है ना? That concept remains constant. चलो guys, let's take the last shot for the day. हाँ, कंपाउंडेड क्वार्टरली तेरे को लिखना है वो। इधर देख बेटा, मैं समझ गया, इधर देख। सो योर कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना बेटा, तो ये जो 20% है, हर क्वार्टर में तेरे को 20% तो हर क्वार्टर नहीं दे सकते, 20% पर एनम है, तो क्वार्टरली तेरे को कितना मिलेगा? तो 20% डिवाइड बाय हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ ईयर? 0.2 डिवाइड बाय 4, सो यू विल गेट 5% एवरी ईयर क्वार्टर। आप कितने क्वार्टर में बाहर निकल जाओगे? 6 months में निकले, तो टेक्निकली कितने क्वार्टर्स हुए? इसलिए रेस टू 2। समझा? प्लीज पूछो, कुछ भी होएगा पूछो। नेक्स्ट, कम ऑन, टेक द लास्ट सम। प्रेजेंट वैल्यू इज 35,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 months। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू इफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। Easy peasy guys. Future value is equal to 35,000 into 1 plus 0.15 compounded annually है, तो इधर कुछ मस्ती नहीं होएगा, ऊपर होएगा 3/12, करेक्ट?
So your answer would be 35,000 into 1.15 raised to 0.25 above. 3 by 12 is. आयो बेटा धीर बोल आंसर बोल. It was still a better day for you. No? 36 244 as per some reliable sources. 240. हाँ ठीक है. आए बच्चों. Eureka. So guys, with this we put an end to today's session because our agenda remains same. But I hope you all have got the taste. You all have also understood what I wish to do. But we can't keep building so much of base in all sessions. So what are we going to do now? Now we will start in the next, only for the next weekend we have same timing. Saturday and Sunday both. We'll have 11 to 2, 11 to 1:30, 11 to 2, whatever. So I'll keep 11 to 2. Maybe we'll wind up in only for next weekend. Post that, every weekend lecture timing will be 7:30 to 1:30. Fair enough? So one small piece of request to all your friends who have not yet started. If they are May 28th, so it's a high time they have to start. If they are September 28th, it is a good time to start. So please spread the word. See you all in the next class. Till then, bye-bye.